Welcome to the physics class. Based on the previous lecture that was on electric field lines and area vector, now we are going to study next topic, that is electric flux. What is the topic? Electric flux. In the previous lecture we studied about electric field lines that starts from positive charge and ends at negative charge. Starts from positive charge and ends at negative charge. That was electric field lines. Okay, so what is electric flux? If we want to define electric flux is number of electric field lines. Number of electric field lines crossing normally. Here normally means perpendicularly. Normally means perpendicular. Number of electric field lines crossing normally to a surface is called electric flux. It means कितनी number of electric field lines एक surface में perpendicularly क्रॉस करके जा रही हूँ surface से, that is called its electric flux. That is called its electric flux. So I am taking a book. Okay, this is the surface of the book. This is the surface of the book. This side is positive charge and this side is negative charge. So electric field line starts from positive and ends at negative charge. Okay, so how much electric field lines are crossing through this surface perpendicularly? This is the surface ना, ऐसे है surface, इससे perpendicularly जितनी electric field lines cross करके जाएंगी, that is called its electric flux. वो इसका electric flux कहलाएगा. That is called its electric flux. I am drawing a diagram. This is the positive charge, this is negative. There is a uniform electric field. So what is the meaning of uniform electric field? Parallel and equally spaced electric field lines are there from positive to negative. I am placing it a surface. So I have placed a surface here. So how many electric field lines are crossing the surface normally? That normally 1, 2, 3, 4, 5. These are touching the surface now. So it is perpendicularly passing through the surface. So these are the 5. So electric flux is 5. Electric flux means how much electric field lines crossing the surface normally. Perpendicularly cross करनी चाहिए उस surface से, वही count होगी. जो perpendicular नहीं है वो electric flux में count नहीं होगी. This is the general meaning of electric flux. Number of electric lines crossing the surface normally. When the surface placed in electric field. अच्छा क्रॉस कब करेंगे? जब सरफेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे. तो सरफेस को जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक लाइन से उसके सरफेस में से कितनी परपेंडिकुलरली क्रॉस करके जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो मैथमेटिकली इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इट विल बी? It will be calculated mathematically as symbol of electric flux is phi. Symbol of electric flux is phi. Phi it is. Okay. Electric flux is the product of electric field. Electric flux is the product of electric field. What was electric field? Electric field was E. Electric field is E. Okay. एंड सरफेस एरिया ऑफ दिस, ये जो सरफेस आपको गिवन है इसका जो सरफेस एरिया होगा, मल्टीप्लाई इट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इट दिस सरफेस इज प्लेस्ड. मींस दोनों टर्म्स यूज हो चुकी हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें सरफेस रखा है उसका वैल्यू, और जो सरफेस एरिया रखा है उसका सरफेस एरिया कितना है, सरफेस आपने रखा उसका एरिया, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का जो प्रोडक्ट है, दैट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बना? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and surface area is called electric flux. Mathematically we can calculate it as. Okay, so if we are taking in vector form, we are taking in vector form, this was the magnet only. If we are taking in vector form, it will having an arrow. So electric field must be in area vector,
and surface area must also be in a vector. So if we are taking in vector form, electric flux is the dot product. Remember dot product? We studied in the class 11 that A dot B is AB cos theta. Theta is the angle between vector A and vector B, dot product of two vectors. So if we are taking electric flux in vector form, that is phi vector is equal to dot product of, there is a dot product of electric field vector and area vector. Electric field vector and area vector. If we want to open this dot product, that becomes A dot B is AB cos theta, that is ES cos theta. If we want to open the dot product, now flux क्या बन गया? ES cos theta. E is magnitude of electric field, S is surface area. What is theta? We should know what is theta here. So ये बात ध्यान देने वाली है कि थीटा क्या है. थीटा को ध्यान से समझिएगा. Here this is the direction of electric field. Okay, from positive to negative, from my left side to my right side. So this is the area placed. So I am taking the book again, taking an example of book. So this is positive and this is negative. So the direction of electric field is this. Okay, so I place this area, this book, between the charges, positive here and negative here. Clear it is na? So I am taking this area or this area. ये एरिया मेरे पास, ये एरिया हो गया. व्हाट इज दिस? द एरिया वेक्टर ऑफ दिस. एरिया वेक्टर सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है. एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से क्या होगा? परपेंडिकुलर. सो दिस विल बी एरिया वेक्टर, दिस विल बी एरिया वेक्टर. सो ये एरिया वेक्टर किसकी डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, पॉजिटिव ये था, नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये हुई, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जो एंगल होगा दैट इज थीटा, दैट इज थीटा. इस केस में जो हमने भी कंसीडर किया, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज द एरिया वेक्टर, तो इसमें तो एंगल दोनों में कितना बन रहा है? 0. बट अगर मैं इसको ऐसे रख लूं, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, लेकिन बुक मैंने परपेंडिकुलर रखने के बजाय थोड़ा सा एंगल पे रख ली, तो क्या होगा? इसका एरिया वेक्टर तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, इधर होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड विल इन दिस डायरेक्शन. आई एम टेकिंग द पेन अगेन. So this is the direction of electric field. Pen is in the direction of electric field. So ये सरफेस ऐसा रखा है, इसका एरिया वेक्टर ये बनेगा. तो एरिया वेक्टर और जो पेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में है. इट मीन्स थीटा 0 होगा इन दोनों के बीच में. बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही रहे, लेकिन हमने जो सरफेस है वो ऐसे नहीं रखा, सरफेस को कुछ टर्न कर दिया हमने. अगर ऐसे रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन, इसका एरिया वेक्टर तो इधर हो जाएगा ना, यहाँ पे ये हो जाएगा. नाउ यू कैन लुक हियर, देयर इज एन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा. दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा. सो E is the magnitude of electric field, S is the magnitude of surface area, and theta is the angle between direction of electric field and direction of area vector. Direction of electric field and direction of area vector, दोनों में जो एंगल होगा that is theta. So we can calculate the electric flux mathematically from this formula ES cos theta. Now if we are taking the small surface area of this, that is having ds, टोटल का सरफेस एरिया ऐसा स्मॉल, उसका एरिया एलिमेंट ले लिया, उसका कितना है? ds. अगर टोटल का फ्लक्स फाई है तो स्मॉल का फ्लक्स हो जाएगा d फाई. अगर आपने टोटल एरिया लिया तो टोटल फ्लक्स, स्मॉल एरिया लिया तो स्मॉल फ्लक्स, दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल, दैट इज d फाई. सो व्हाट इट विल बी? इट विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ E and small area vector, that is ds vector. So we can open it as E ds cos theta. E ds cos theta. Suppose we have the flux of this small element, but we want to calculate the flux of this total surface area. We have the flux of this small element, but what we want to calculate? We want to calculate the electric flux of total surface area. What we will do for full
सरफेस, फुल सरफेस के लिए अगर आपने फ्लक्स निकालना है, वी विल इंटीग्रेट इट, that is E ds cos theta integration over closed surface, means over full surface. So we will integrate the flux of small element. If we are integrating the flux of the total small element, we will get the flux for the total surface area placed in electric field. So this was all about the electric field and electric flux, sorry. So what is the SI unit of electric flux now? SI unit of electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है, एक्चुअली फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज स्केलर. सो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन. फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर से मिलना है जरूर, लेकिन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है. तो ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा? स्केलर क्वांटिटी. दिस विल नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन. वी आर यूजिंग द एसओ यूनिट. एसओ यूनिट फॉर्मूला से बनेगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम और सरफेस एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द एसआई यूनिट? दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम is the SI unit of electric flux. Now we are taking the special cases because theta can vary. Theta can vary. I am taking the book again. Okay. What was the my finger is in the direction of electric field. इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका एरिया वेक्टर है. अभी ये दोनों पैरेलल हैं, सो एंगल इज theta. Theta is 0 degree. So theta having value 0 degree between electric field and area vector. So first case is, we are taking the special cases now. First case, if theta is 0 degree, theta is 0 degree. So what will happen? Put the theta 0 here. If we are putting theta 0, cos 0 1. So what will be the flux? Flux is ES. That is maximum flux. Maximum flux means maximum electric field lines will cross through the surface, that is called maximum flux. If there is angle theta between the direction of electric field and area vector of that surface. So this is the direction of electric field now. My finger representing the direction of electric field. If I am rotating this surface, my finger is in the same direction, but sorry, I am taking the pen again. Pen is in the direction of electric field. I am rotating the surface, but pen is in the same direction. So area vector इसका इधर हो जाएगा. So there is an angle between direction of electric field and area vector. So angle can be changes. अगर ये ऐसे रोटेट करता रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ. और ये इसका एरिया वेक्टर बनेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर होता है. तो व्हाट इज द डायरेक्शन इन बिटवीन दीज टू? दैट इज 90 डिग्री. So angle can be changed between these surfaces. So if we are taking theta 0, flux will be maximum. And second case, if theta is 90 degree. If theta is 90 degree, put the value of 90, cos 90 becomes 0. Flux will be 0. Flux will be 0. There is no electric lines crossing the surface perpendicularly. That flux will be 0. So now third case, if we are taking theta to be 180 degree, if theta is 180 degree, it means direction of area vector is opposite side to the direction of electric field. So but phi will be cos 180, that is -1, that is minus ES. What is the value of electric flux? That will be minus ES. Negative electric flux will be there. Negative electric flux will be there. Negative electric flux हो. It means अगर एक सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है और उसकी ओरिएंटेशन अगर पोजीशन चेंज हो रही है, इट मीन्स फ्लक्स उसमें चेंज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसमें जो क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलरली वो भी लगातार क्या हो रही है? चेंज. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मैथमेटिकली वी कैन कैलकुलेट इट using the formula, that is phi representing flux, E that is electric field, S is surface area, that surface area which is placed in the electric field to cross the electric field lines.
in the taking the electric field and surface area vector form, electric flux is equal to dot product of electric field and surface area. If you are obtaining the dot product, that is E dot S as A dot B is equal to AB cos theta, E dot S is equal to ES cos theta. Phi is a scalar quantity because dot product of two vectors is a scalar quantity. So flux is a scalar quantity. If we are having the small surface area of a small element, so we will take it as ds, and instead we are taking s. Now we are taking ds because we are taking now small element. So flux will be smaller. D phi is equal to E dot ds, E ds cos theta. If you want to calculate the full surface electric flux while giving the flux for the small element, we can integrate the value of small element. Integrated it. SI unit of electric flux is Newton meter square per coulomb. So there are some special cases also, because theta is the angle between direction of electric field and area vector, that can be changed. If angle between area vector and electric field is 0, theta 0, flux will be maximum from this formula, cos theta cos 0 1 ES. If theta is 90, flux will be 0. If theta is 180, flux will be negative. So flux changes with the orientation of the surface in electric field. So this was all about the topic electric flux. Okay, thanks and have a nice day.